Oh. Hmm. Uh, uh, uh. Hi. Hmm. Ecosystem, biodiversity conservation, and chemical connection integration. না ওখানে স্টার্টিং এর উপরে লেখা থাকে স্টার্টিং এর রিভিউ টেস্টের মধ্যে এখানে রিভিউ টেস্ট লাস্ট মিনিটটা এটা মিক্সি হবে anatomy in flowering plants. Next is next chapter is reading by biological conservation for molecular basis total. This is 11 এটা okay so biology then 3 11 1 and unit 7 mix ছিল According to Whittaker classification, Chlorella and Amoeba both are included in kingdom Protista. Chlorella and Amoeba both included in kingdom Protista. এটা correct. Chlorella and Amoeba both are unicellular eukaryotes and have cellulosic cell wall. না, Chlorella হচ্ছে algae, it is prokaryote. আর Amoeba is a Protista, it is eukaryotes. Chlorella algae prokaryote and Amoeba Protista. Smallpox, influenza virus diseases are caused by bacteria, no virus, viroids.
of an adenine molecule without protein coded chain. Next is, read the following statement and find out how many statements are incorrect. Chlorella are used for food supplements even by space travelers. Read the following statements and find how many statements are incorrect. Chlorella is used as food supplement even by space travelers. It is correct. In bryophytes, zygote undergo reduction division. No, zygote do not undergo reduction division. It mitotic division. Bryophytes. अच्छा algae का zygote direct reduction division कुछ भी. During spore formation within the sporophyte. Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binders. This is correct. Some characters or structures are given below. How many of them are found in both bryophyte and pteridophyte? Okay, Archegonia. Archegonia found in both. Archegonia do not found in algae and angiosperms. Okay, Protonema of mosses, that is bryophyte only. Ovules only seed plants, that is gymnosperm and angiosperm. Ovules only in seed plants. Find out which one is correct for gymnosperm. Okay, in cycles, the pinnate leaves persists for few days, not for few days. This is for 2 years, a few years. Coralloid roots of Pinus are associated with interfixing cyanobacteria. No, this is of cycles, not Pinus. Okay, development of pollen grain takes place within the microsporangia. Correct statements. Because the pinnate leaves persist for not few days, this is for few years. Coralloid roots of Pinus are associated with interfixing cyanobacteria. Not Pinus, this is cycles. Cycles have coralloid roots. And the development of pollen grain takes place within the microsporangia, not megasporangia. Pollen grain takes place within the microsporangia, not the megasporangia. And then female apophyte bear two more archegonia. Association in the form of mycorrhiza, and not for this is for gymnosperm. Okay, fungal association in the form of mycorrhiza. Gymnosperm. Multicellular female gametophyte bear two to more archegonia. Okay, the male and female cones may be born on the same tree or on different trees. This is correct for gymnosperm. Statement A, C, D are correct and B is incorrect. Okay, incorrect kontalo. B is incorrect. A is correct because in gymnosperm main plant body is sporophyte. Okay, C is correct because multicellular female
not independent. It wears archegonia. It formed before fertilization. Okay, which of the following statement is true for female gametophyte in gymnosperm? It nourishes the developing embryo present in the seeds. Female gametophyte nourishes the developing embryo present in the seeds. It is not independent. It is not independent. It is dependent, and it wears. A female gametophyte formed before fertilization. Female gametophyte forms before fertilization. Unlike angiosperm, forms after fertilization. Which of the following statement is true for female gametophyte in gymnosperm? It nourishes the developing embryo seed in embryo present in the seed. It is not independent. It is dependent. Gametophyte of gymnosperm is dependent on sporophyte. It wears archegonia. It is. This formalization. Oh! Ha! Ha! Um, Polynoid contains protein surrounding the starch. The statement 2, Porphyra laminaria and Spirogyra. This is sargassum, which used as food. Platyhelminthes থাকে Fasciolus platyhelminthes Maris annelid Tinoplana aplysia function aplysia mollusca এটা এই দুটো থাকে না Fasciola তে দুটো থাকে okay next is এটা এটা হচ্ছে Tinoplana Tinoplana The mesoglea is present in diploblastic organism which lack mesoderm. Coelenterata and Ctenophora mainly. Podifera হবে না. Coelenterata and Ctenophora mainly. Mesoglea দুটোতেই থাকে. Coelenterata and Ctenophora. তারপরে next one. Which one is false about monocot stem? Vascular bundles are conjoined, scattered and surrounded by parenchyma.
followed by parenchymatous bundle sheath. Now this is sclerenchymatous bundle sheath. Monocot stem MS. Sclerenchymatous bundle sheath. Hypodermis is sclerenchymatous. Is correct. Ground tissue remain undifferentiated into cortex, endodermis, and pith. Correct. Peripheral vascular bundles are larger and less in number as compared to the central part. Scattered vascular bundles are taken. Peripheral, central, larger, smaller, higher. Monocot stem and of typical dorsiventral leaf. Mesophyll differentiated into palisade and parenchyma and spongy parenchyma. This is correct. Presence of parenchymatous bundle sheath. Parenchymatous bundle sheath also correct. The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis. Abaxial down lower part. This is also correct. Vascular bundle are open type. No. B C correct. Close. Cambium absent. This is closed है. Cambium present शुद्ध stamen month है and root है and conjoined vascular bundle. In the given following example, how many plants show superior ovary with swollen placenta? Superior ovary with swollen placenta. Fabaceae family. Fabaceae दिखा दे लो. Superior ovary Fabaceae था क्या? Swollen placenta Fabaceae. Right, Fabaceae. What for Fabaceae? Mulethi, Indigofera, Mulethi sunhim. No. This is tomato. This is brinjal. Then potato, chili, petunia, tobacco. Okay. So let me see only the 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Swollen placenta and superior ovary. Swollen placenta first. So let me see only. Stamen ovary superior, placenta swollen with 2 ovules and non-endospermic seed. No, Solanacea the endospermic seed. Non-endospermic seed. Solanacea endospermic seed. Stem branch, solid or hollow, hairy and glabrous. Okay. Persistent calyx, velvet estivation. Okay. Epipetalous stamen ovary superior and placenta swollen with 2 ovules. Non correct. A fruit is formed after fertilization of the ovary is called parthenocarpic. No, before fertilization is parthenocarpic. A flower having either only stamen or only carpellus bisexual. No, is a semisexual. Mono. In a lily plant, the calyx and corolla are not distinct. Calyx and corolla are not distinct. This is correct. A sterile stamen is called stamen. Next is not a constant body temperature. Okay. This is particular thermal.
hepatic portal and renal portal systems are present in frog, correct? Due to enucleated RBC in frog, RBC does not help in transportation of gases. One statement, one correct statement, two correct হবে না, right? Enucleated RBC থাকে, enucleated RBC mammals এর থাকে and frogs এর enucleated থাকে, কিন্তু RBC does not. Statement for frog. Urinogenital duct present in male frog only. Female frog can lay 2 internal and external takes place in the water. Okay, 10 to 12 pasa efferentia present in male frog. Sternum along with 8 and 9 sternum. Anal style present on 9th sternum in males. Anal style in males, correct, and in 9th sternum. Because this is 4th to 6th abdominal segment. It is correct. Mushroom gland from 6th to 7th segment. Mushroom mushroom 6 to 7 and spermatheca. Later, anal style. The spermatheca, collateral gland, and vestibular meet in the female. Of the incorrect statement about cockroach. Internal fertilization takes place in the genital chamber. This is correct. Seminal plasma stores sperms and small tubule provide nutrition to them. This is correct. Female ovaries can produce 16 ova at a time, not 16 ova. 9 to 10 ootheca, and which contain 15 to 16 ova. Okay. Wings look odontoid process is characteristic feature of axis vertebra. Axis, atlas, then axis. Odontoid process is the characteristic feature of axis vertebra. Okay. The common feature which is present in muscle and nerves: excitability, conductivity and sensitivity. Contractibility है ना, because nerve cells do not contract. Excitability muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system via motor neuron. Muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system via the motor neuron. A neural signal reaching the motor end plate releases calcium to plus. Releases acetylcholine, which secrete calcium to plus from sarcoplasm.
cytoskeleton, microfilament, microtubule, and intermediate filament. Microtubule, microfilament, and intermediate filaments are the part of cytoskeleton. Microbodies are not a part of cytoskeleton. Peripheral protein. Okay. Only after the advent of electron microscope in the year of 1950s. Depending on the age of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral proteins. The detailed structure of cell membrane was studied only after the advent of electron microscopy in the year of 1950s. And C correct, so B correct. And usually result in the production of haploid daughter cell with identical genetic complement. Now C is restricted to haploid cells only. No, this is diploid cells also. Prophase and this is anaphase. Is the correct statement. All enzymes are made up of protein. Not all, but almost all enzymes are made up of protein except ribozyme. Thermophilic organisms produce enzymes that can tolerate high temperature. Activity of an enzyme is a crevice where the substrate can bind. All are correct, not all. Only B and C are correct because almost all enzymes are made up of protein except it decreases the reaction rate by about 10 million times. We have 6 lakh molecules per second. Correct match: blood plasma, plasma proteins, water content of the blood is 98%. Blood plasma 55% and formed elements 45%. Plasma protein 6 to 8% and the water content in the body is 90%, not 98. Water content in the body is 90% and plasma proteins are 6 to 8%. So, and micro protein. Plasma proteins are a clotting factor 6 to 8%. And the blood is formed of formed elements 45%. Plasma 55%. Plasma contains 90% of water, 6 to 8% of plasma protein or clotting factor, and 1% of minerals. Okay. Which is correct about the serum? Which is correct about the serum? Blood. Blood minus
Pulmonary and aortic semilunar valves are always remain closed during the cardiac cycle except for ventricular systole, ventricular contraction. This pulmonary and aortic valves are open blood flow. Pulmonary and aortic semilunar valves are always remain closed during the cardiac cycle except ventricular contraction. Ventricle contract full. Absent in blood capillary. Only tunica interna is present. Only tunica interna is present in blood capillary. Which of the layer is absent? Externa media absent. Only tunica intima is present in blood capillaries. Only tunica intima is present in blood. Tricuspid closure sound and duck sound from pulmonary or aorta semilunar valves closed sound. This is after the end of ventricular contraction before start of joint diastole. Love sound, bicuspid or tricuspid closure sound, and to prevent the backflow due to ventricular contraction. To prevent the backflow due to ventricular contraction. Segment 1 and 2 and choose the correct option. All vertebrates and few invertebrates have closed circulatory system. This is correct. And though the human heart is auto-excitable, but its function can be moderated by only neural mechanism. No, not only neural mechanism, also by hormonal mechanism. And squamous epithelium of alveoli and endothelium of alveolar capillaries. All of the above have the structure has total thickness, which has total thickness much less than a millimeter. All of these have a structure has total thickness about much less than a millimeter. Okay. Choose the incorrect statement. Only aquatic arthropod and mollusca aspire through gills. No. Annelids uses their moist cuticle for respiration. This is correct. Annelids, that is earthworm. Earthworm uses their moist cuticles for respiration. An earthworm is an annelid. Is not stable. This is a reversible reaction and carbamine and hemoglobin is unstable form. 20. Height of actual diffusion of CO2 and O2 between blood and atmospheric air is the exchange part, not only alveoli but the exchange part total. Site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air is the exchange part. Site of actual diffusion of O2 and CO2 between the blood and the atmospheric part is exchange part, not the alveoli part.
following function or effects are related to cytokinin? Internode elongation, gibberellic acid, delay of leaf senescence, it is cytokinin, and breaking seed dormancy, it is ethylene. Ethylene is dormancy breaker. Bolting, gibberellic acid, lateral shoot growth, cytokinin, nutrient mobilization, cytokinin, apical dominance, auxin. The secondary permanent tissue. Okay, then are secondary xylem. Phloem and woods are secondary permanent tissue. Secondary xylem. Interfascicular cambium is secondary meristem. Phelogen and interfascicular cambium, they are secondary meristems. Interfascicular cambium is secondary meristem. C2H4 promote leaf senescence. C2H4 promote leaf senescence. C2H4 causes the apical hook formation. C2H4 promotes the horizontal growth of seedling and the swelling of axis. This is also correct. And ethylene promotes the female flowering cucumber and thereby increasing the yield. Horizontal growth of the seedling and swelling of axis. Correct. C2H4 promotes the female flowering cucumber and thereby increasing the yield. This is also correct. Produce new leaves and produce chloroplast in leaves, lateral shoot growth, adventitious root formation. How many of them related with cytokinin? All of are related with cytokinin. Produce new leaves. Both adventitious shoot Uh, uh, uh. Ha. grape stalk, gibberellic acid. Increase the length of grape stalk, gibberellic acid. Cause fruit like apple to elongate and improve its shape, gibberellic acid. Delay senescence. Extend the market period. Fruit can be left on the trees. This is delay senescence, gibberellic acid. Speed up malting process. All are related to gibberellic acid. Ethylene, not role of GA. Hastens the leaf fall at early stage, abscisic acid, and C2H4. Induce parthenocarpy, GA also induce parthenocarpy. Responsible for apical dominance, not this. Auxin responsible for apical dominance. Control xylem differentiation, auxin.
Francis Darwin observed that the coleoptile of Canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source, not against. In 1910, H. Cousin confirmed the release of volatile substance from ripened oranges that hastens the ripening of stored unripened bananas. Auxin was isolated by H. Cousin from tip of coleoptile of oat seedling. This is correct. And the term kinetic was given by X. Cook. One is incorrect but two is correct. Right? F. Cook. The term kinetic was given by F. Cook. This is correct. Schwann cells are present in myelinated and unmyelinated axon. This is correct. And reason, Schwann cells has functions of myelinogenesis in CNS and functioning as packaging cell in autonomous neural system and somatic neural system. Both are correct but not the okay. Arrange the following diagram according to the conduction speed in increasing order. Is myelinated and faster than unmyelinated. Without NOR and slower, and myelinated with NOR, this is faster. Notes of Rentier. This is fastest conduction. So see. Following diagram represent conduction of nerve impulse in A and B segment. Influx of sodium plus. Okay, what would be the direction of sodium plus ion in the ICF, intracytoplasmic fluid? Following diagram shows or represent the conduction of nerve impulse in A and B segment. This influx of sodium plus. This is extracytoplasmic fluid. This collection of nerve fibers in the peripheral nervous system is called nerves. Nerve fibers in peripheral nervous system is called nerves. Okay. Enzyme found in the synaptic cleft. Now vesicle node of Ampere nerve. The axonal membrane is dash to negatively charged protein present in the axoplasm. And it is impermeable to sodium plus and negatively charged protein.
high potassium plus and low sodium plus. In exoplasm, the exoderma impermeable to negatively charged protein. Exoderma is impermeable to negatively charged protein. Fluid outside the axon. Fluid outside the axon is exoderma is impermeable to negatively charged protein. Fluid outside the axon, low potassium plus and high sodium plus. Tactile and auditory. Tactile and auditory here and visual. See. Gray matter is composed of cyton. Gray matter is composed of cyton and non-myelinated axon. Gray matter, cyton and non-myelinated axon. Cyton and non-myelinated axon. Gray matter is not there. The white fibers থাকে না myelinated axon. Gray matter is composed of cyton and non-myelinated axon. Involuntary control of voluntary muscle is maintained body posture or balance by cerebellum. Involuntary control of the voluntary muscle is under the control of which part? Cerebellum. This is maintain the body posture or balance, which maintains the body posture and balance. Body posture regulation, because body posture regulation এর কাজ করে regulation of anterior pituitary glands also by hypothalamus, but not body posture regulation, which is the function of cerebellum. Oligodendrocytes in CNS and Schwann cell in PNS. Okay, in myelinated nerve fibers. Myelin is synthesized by oligodendrocyte in myelinated nerve fibers. Now, oligodendrocyte হচ্ছে CNS cell আর Schwann cell PNS cell. তাহলে এখানে কি থাকবে? Impulse of CNS to skeletal muscle. Relay the impulse of CNS to skeletal. Contains both myelinated and non-myelinated fibers. Okay. Which potential developed on postsynaptic membrane is always stimulatory. No, not stimulatory. Arachnoid is the middle layer. Okay. Dua matter outside, arachnoid matter middle, and pia matter is of inside. Arachnoid matter is middle layer and close content of brain. No, is called the midbrain is located between thalamus, hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain, not midbrain. Pons of the hindbrain. The pons contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes, and gastric secretion.
Ha. Hmm. Which include all incorrect statements only. Duometer is the outermost layer which is thick and very strong and non-elastic. Duometer is outermost layer which is thick and very strong and non-elastic. No, it is incorrect. Innermost layer হবে and outermost হবে. The arachnoid is middle layer. Okay. Pyometer is the inside layer. Arachnoid is found in amphibian. Only in amphibian. No. Mammals body skin খোলা ছিল। আমি আচ্ছা খুলবে না কিন্তু এদিকে দেখছি খোলা ওরাই দেখো টিচাররা Oh. Ha. Ha. Mm. তারা কিন্তু তাতেও পাবে না নাম্বার বেশি একবারে মারলাম কেটে মারলে হবে না পড়ে গেলে এটা আসবে যা আর মারতে হবে The passing of the electrons removed as part of hydrogen atom to molecular oxygen with synthesis of ATP. The site of the process located in the ETS কোথায় চলে ছিল একটা মেমব্রেন আর না এই মাঝখানে না মেমব্রেন হবে অন্যান্য মেমব্রেন তো মাইটোকন্ড্রিয়া আচ্ছা মেমব্রেন স্পেস বাইরে আর ইনার মেমব্রেনের মধ্যে চলে মাইটোকন্ড্রিয়া in mitochondria proton accumulate in the matrix brain mitochondria আর এটা হলো ইন্টার মেমব্রেন স্পেস ওকে আর এখান থেকে তৈরি হচ্ছিল সো এখান থেকে আর এখান থেকে তিনটে যে সিস্টেম ছিল তিনটে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম in the intermembrane space
Uh, uh, uh. Ha. Hmm. 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 Mm-hmm. Uh. Oh! Ha! Ha! Mm-mm-mm. Um. 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 Hmm. Hmm. Mm-hmm. Uh. Inspiration. Medullary nephron differs from cortical nephron in number, presence of vasa recta, and the length of loop of Henry. সব কটাই number 10%, and rest of Oh! Ha! Ha! Mm-mm-mm. Oh! Ha! Ha! Mm-mm-mm.
vessel carrying the maximum and least amount of urea are hepatic vein and renal vein respectively. Hepatic vein contains maximum amount of urea and renal vein contains minimum amount of urea. And which of the following components of blood do not normally enter the nephron during ultrafiltration? Albumin is a protein. Albumin do not enter. Desert mammals are adapted to water storage by having nephrons with longer loop of Henle. Desert mammals are adapted to water storage by having nephrons with longer loop of Henle. Water in which of the following segment of nephron DCT and collecting duct vasopressin exchange the reabsorption enhance the reabsorption of water in which of the following segment of nephron, that is lateral parts of the nephron, or DCT and collecting ducts, lateral part of the nephron, DCT and collecting ducts. Brush border cuboidal epithelium. This is of useful material from the nephric filtrate assertion. Both are correct but not the correct explanation. Aldosterone produce adrenal medulla. No, reabsorption of sodium ions in DCT is controlled by the hormone vasopressin and aldosterone both. Vasopressin produced by adrenal cortex and aldosterone produced by adrenal cortex and vasopressin produced by neurohypophysis. Reabsorption of sodium ion in DCT is controlled by hormone aldosterone. Of the blood vessel. It increases the permeability of collecting duct and DCT to water. Yes, vasopressin increases the permeability of collecting duct and DCT to water. It promotes sodium reabsorption from DCT and collecting duct. Okay, aldosterone plus ADH also. Flexion of the muscle of the sphincter. Okay, but activation of the stretch receptors in the wall of ureter, not ureter. This is urinary bladder. The total sum of all ecosystems present in Earth is called global ecosystem or the biosphere. The total sum of ecosystems present in the Earth is the global ecosystem or the biosphere. Both 2 and 3 directly affect the rate of decomposition.
soil and get precipitated by leaching are inorganic nutrients in organic nutrients. Given sparrow and human belong to more than one trophic level. Lion is always tertiary, top consumer, carnivores only. With the following statement, and only 10% of the energy is transferred to each trophic level from lower trophic level. Correct. Standing crop is a measure of in terms of biomass only, not only biomass or number in a unit area. The standing crop is measured in terms of biomass only, not only biomass or also the number in a unit area. Okay, the ecosystem. In ecosystem, amount of value of energy of sunlight available to the producer will be. Of sunlight or energy of sunlight available to the producer. 10 to the first 7. Animal and 30% of plant. Still the plant are the and back the insect are 70%. So majority is insect. If we consider invertebrates and invertebrates, the maximum global diversity after insect is seen in Mollusca. If we consider the invertebrates, the maximum global diversity after insect is seen in Mollusca. Production of oxygen by forest is an example of broadly utilitarian. Production of oxygen by forest is an example of broadly utilitarian. Ethical is nothing and narrow is direct money. In acromegaly, especially of the face occurs. Stunted growth results in the pituitary dwarfism, and this is due to the low secretion of somatotropin hormone. Somatotropin is another name of growth hormone. Both are same. Somatostatin is inhibitory substance for growth hormone. Which of the following pair of hormone is not antagonistic? Which of the following pair of hormone is not antagonistic? Insulin, glucagon antagonistic. FSH and LH not antagonistic. Work together. Calcitonin and PTH are antagonistic. MSH and melatonin also antagonistic hormone. Lipid soluble. FSH and LH are protein hormone. Prolactin, oxytocin, also protein. Thyroxine is T3 hydrogenated, and aldosterone from adrenal cortex thyroid hormone, and adrenaline, noradrenaline, amino acid derivatives. Which of the following hormone is secreted by the stromal tissue of thyroid gland? T3, T4, follicular cells, stromal tissue, none. Ow! Ha! Ha! Mm-mm-mm.
Ha. Hmm. Um. Uh. Ha. Hmm. कोऑर्डिनेशन उस चार्टे का रिप्लाई देते हैं।
Looking for 150 special people to be a part of the special cohort here at Tuma. These people will be trained by founders, business leaders, and VCs to build their own companies or to work in leadership positions in startups. The way we do this is in three ways: a new age curriculum that is taught by business experts via the case-based methodology in the classroom, स्पाइनल नर्व्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। बाकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करेंगे, क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, ये सेंसरी भी होती है, यानी कि मैसेज लेकर भी जाती है, सेंसरी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे दो चीजें आती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं, पीएनएस का पार्ट निकल रहा है। अब यार ये जो नर्व्स है ये किसी वॉलंटरी पार्ट को भी इनर्वेट कर सकता है ना, वॉलंटरी पार्ट की तरफ भी जा सकती है। और ये जो नर्व्स है ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक भी जा सकती हैं, ग्लैंड्स तक भी जा सकती है जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, है ना भाई। मोटर नर्व्स जो यहाँ से निकल रही हैं वो वॉलंटरी रीजन तक भी जा सकती है, इनवॉलंटरी। तो जो वॉलंटरी वाले पार्ट में जाएगा वो सोमैटिक का पार्ट हो जाएगा, जो इनवॉलंटरी वाले पार्ट में जाएगा वो ऑटोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा। तो अब ये पेज पे लिख लेते हैं तरीके का हो गया। वन इज कॉल्ड एज सोमैटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वाला कहां से जा रहा है, सीएनएस से नर्व्स जा रही हैं किसके पास, वॉलंटरी हिस्से में। वॉलंटरी हिस्सा मतलब स्केलेटल मसल्स मान लो, ठीक है। तो ये कैसा हिस्सा है, वॉलंटरी हिस्सा है कि नहीं है। यहां पर सीएनएस से नर्व्स जा रही हैं आपके इनवॉलंटरी हिस्से में। इनवॉलंटरी हिस्सा, इनवॉलंटरी कौन सा, uh, ha, hmm.
Oh, ha, ha, Oh, ha, ha, Oh, ha, ha, Glycerol would enter in the respiratory pathway after being converted to PGAL. Okay, this is correct. Not the correct explanation. Both are correct but not correct explanation. Mark the correct statement for meiosis. Sister chromatids separate during NFS2. This is correct. Bivalent or tetrad clearly visible in pectitin, not zygotin. Bivalent or tetrad clearly visible in pectitin. Chiasmata is observed during pectitin, not in pectitin. Okay, so bivalent or tetrad clearly visible under pectitin stage, not zygotin stage. Frugivorous birds are found in large number in tropical forest mainly because the availability of fruit throughout the year. Sorry, but temperature variation depend on temperature depend on because this is estrogen, this is uterine cell membrane. Estrogen কোথায় bind করে uterine cell membrane bind করে, not in the ovarian cell membrane. Okay, into the uterine cell membrane. Hormone. Exophthalmic deficiency. Exophthalmic goiter is hyperthyroidism. Next is if a person is injected by testosterone and epinephrine. Testosterone acts slowly and epinephrine quickly. Why? Because epinephrine secondary messenger faster and testosterone acts as a steroid hormone and gene expression. Slowly gene expression.
are given regarding blood cells. Eosinophils are involved in inflammatory reaction. No, basophil in inflammatory reaction and infections or allergic reaction in eosinophil use that. And basophil is inflammatory reaction. Basophil inflammatory, but eosinophil in infection and allergic reaction. Basophil are not most. Vertebrates that respire through gills are all of this: aquatic arthropod, fishes and mollusca. They are not vertebrates, only fishes are vertebrates. The vertebrates that respire through gills are fishes. Respire through gills is aquatic arthropod and mollusca. All the vertebrates are fish. Cortisone is not neurotransmitter. Cortisone is not neurotransmitter. ওরা ওইবারই থ্যাঙ্ক ইউ তোমরা এরকম করছে না খেয়ে দে ভয় লাগবে Ow! Ow! Ha! Ha! Neural systems which are enclosed by Schwann cells are both myelinated and unmyelinated nerve fibers. Nerve fibers are autonomous and somatic neural systems which are enclosed by Schwann cell are both myelinated and unmyelinated. Integrates information received from the seminal canal auditory system. This is cerebellum, the function of cerebellum, not cerebrum. The pons contain centers which control cardiovascular system. The medulla contains the center which controls respiration, cardiovascular reflexes, and gastric secretion. Okay. Of high osmolarity of medullary interstitium fluid. Ow! Ha! Ha! Oh. Ow! Ow! Ha! Ha! Ah! Ow! Ha! Ha! Ow! Ha! Ha! Ow! Ha! Ha! Oh, Ow! Ha! Ha!
Oh, ha, ha, Oh, ha, ha, Oh, ha, ha, Content of nucleus is continuous with the rest of cytoplasm, nucleoplasm, as it is not a membrane-bound structure. This is correct. Ribosomes are composed of ribonucleic acid (RNA) and proteins, not lipids, and are not surrounded by any membrane. Ribosomes are composed of ribonucleic acid (RNA) and proteins and are not surrounded by any membrane. The enzyme activity decreases as temperature increases. Which enzyme is not a protein? All enzymes are protein except ribosome. This is nucleic acid, so ribosome is not a protein. The main reason for low productivity of ocean is the deficiency of nitrogen. The main reason for low productivity of ocean is the deficiency of nitrogen. When an organism dies, it starts a detritus food chain and detritus sparrow and human. Crops. This is correct. All herbivores are primary consumers. This is correct. All herbivores are primary consumers. Energy flows from particular trophic level to the next trophic level. Some energy is always lost as heat at each step. This is correct. Heat loss increases disorderedness, which is an universal tendency of all ecosystems, and for this ecosystem needs a constant supply of energy. Heat loss increases disorderedness, and which is an universal tendency of all ecosystems. Wide variety of taxa on a logarithmic scale is a straight line.
and for this ecosystem needs a constant supply of energy. For a wide variety of taxa on a logarithmic scale is a straight line. Okay, logarithmic scale is a straight line. Assertion, and the reason is a stable community must be resistant to invasion by alien species, but not the correct explanation. The community must be resistant to invasion by the alien species. This is also correct, but not the correct explanation. Read the following statements. Cattle do not browse calotrophes as these plants produce highly poisonous cardiac glycosides. This is correct. Totally unrelated species can compete for the same resources. This is also correct. And these resources need not be always limiting for competition to occur. This is correct. In interference competition, the feeding efficiency of one species the Gauss exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist independently. Species competing for the same resources cannot coexist indefinitely. The cuspid valve closed due to decreasing the atrial pressure from ventricular pressure. Okay, decreasing the ventricular pressure from atrial, no. Decreasing the atrial pressure from vena cava, no. Decreasing the atrial pressure from the ventricular pressure. The cuspid valves are closed. Carboxyhemoglobin. Okay. In which lymphoid organ maturation and proliferation of the lymphocytes occur? Primary lymphoid organs. In which lymphoid organ maturation and proliferation of the lymphocytes occur? Primary lymphoid organ maturation and proliferation of the lymphocytes occur. Ow! Ha! Ha! Ow! Ha! Ha!
control and coordination. तो आप क्या करते हैं? पहले तो हैरान होते हैं, फिर अपना हाथ अपने मुंह पे लेकर आते हैं, फिर अगर ज्यादा जोर से पड़े तो रोते भी हैं, चीखते भी हैं, और अगर सामने भाई बहन है, मम्मी पापा नहीं है, तो एक सामने से उठाते भी है ना? तो कितनी सारी चीजें साथ में काम कर रही है, कितनी सारी चीजें साथ में काम कर रही हैं। आपने चीखा, आपने आगे से भी हाथ उठाया, और फिर उस चांटे का रिप्लाई देते हैं। तो ये आगे से बताऊं और सामने वाले की और चाटा लगाऊं। तो ये जो किया, ये दो सिस्टम मिलके करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी? कभी कोई डॉगी पीछे पड़ जाए, दौड़ रहे बचा रहे हैं अपने आप को, है ना? मल्टीपल सिस्टम्स आर अगेन वर्किंग टुगेदर। तो दैट इज परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में दो चीजें करते हैं, दो सिस्टम करते हैं। पहला नर्वस सिस्टम पॉइंट कनेक्शन बनाता है। कैसा? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वो कैसा कनेक्शन बनाता है? वो हर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है, ये ब्लड की मदद लेता है। ब्लड की मदद लेकर रीचेस सिग्नल है, हो सकता है वो हर कोने तक ना पहुंचे। ठीक है? पहुंचाना है, तुम इसकी मदद से पहुंचा सकते हो। ठीक है? नर्वस सिस्टम थोड़ा फास्ट है, हार्मोन्स और न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं और आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करा जाता है। ठीक है बच्चों? यस बच्चों, तो आज की क्लास में हमने कौन सा सिस्टम करना है? आज की क्लास में हमने नर्वस सिस्टम करना है, हमने इसका मेजर सेल करना है जिसका नाम है न्यूरॉन। ओके जी, आ जाइए। इससे अगला वाला जो सिस्टम है, जो हार्मोन्स वाला है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हमने आज डिस्कस करना है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनएस लिख दूँ और इसको लिखूंगी पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी? यस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन आएगा बच्चों? एक तो तुम्हारा भेजा ये जो नर्व्स है, जो ब्रेन को बाकी की बॉडी से कनेक्ट करती है, इस तरीके से कनेक्ट करती है, ये सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है जी? जो बाकी की बॉडी के साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है। तो इसमें कौन सी आ जाएंगी? नर्व्स आ जाएंगी। नर्व्स बेसिकली क्या होता है? गुच्छा होता है न्यूरॉन का ही। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन ओनली।
चाहता हूँ यार। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस हो तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है। और इसी गाइडेंस के साथ हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा सुपर 60 क्रैश कोर्स। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बेटा, हर एक बच्चे को पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी बढ़िया तरीके से। सिलेक्शन किट जो आपके घर तक पहुंचाई जाएगी और तैयारी एक सही डिसीजन से होती है बेटा। जॉइन सुपर 16 ना। দেখুন না এই এক খেয়ে চকলেট কুকিজ খেতে খেতে জীবনটাই মনমরা হয়ে পড়েছে। ওর নাম কি? জিমি। फाइनल नर्व्स का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। बाकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करेंगे, क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे तो ये कैसी होती है? ये सेंसरी भी होती है, यानी कि मैसेज लेकर भी जाती है, सेंसरी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे दो चीजें आती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन बैठा है? सीएनएस बैठा है। से नर्व्स निकल रही हैं, पीएनएस का पार्ट निकल रहा है। अब यार ये जो नर्व्स है ये किसी वॉलंटरी पार्ट को भी इनर्वेट कर सकता है ना? वॉलंटरी पार्ट की तरफ भी जा सकती है। और ये जो नर्व्स है ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक भी जा सकती है, ग्लैंड्स तक भी जा सकती है जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, है ना भाई? मोटर नर्व्स जो यहाँ से निकल रही हैं वो वॉलंटरी रीजन तक भी जा सकती है, इनवॉलंटरी। तो जो वॉलंटरी वाले पार्ट में जाएगा वो सोमैटिक का पार्ट हो जाएगा, जो इनवॉलंटरी वाले पार्ट में जाएगा वो ऑटोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा। तो अगले पेज पे लिख लेते हैं मेरे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। कितने तरीके का हो गया बच्चों? कितने तरीके का हो गया? दो तरीके का हो गया। वन इज कॉल्ड एज सोमैटिक, स्केलेटल मसल्स मान है कि नहीं है? यहाँ पर सीएनएस से नर्व्स जा रही हैं आपके इनवॉलंटरी हिस्से में, इंटरनल है जो विसरल है। इनवॉलंटरी मसल्स और ग्लैंड्स आ जाएंगे। वॉलंटरी मसल्स आती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। को इनर्वेट कर रहा है ना, ये देखो विसरा को इनर्वेट कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आगे दो तरीके का है। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस
कोशिश करेगी। अभी तो मुसीबत तो नहीं लग रही, अंदर से डर तो नहीं लग रहा, एंजाइटी तो नहीं हो रही, हार्ट रेट तेज तो नहीं हो रहा, रिलैक्स कंडीशन। यानी कि ये सिचुएशन कौन सी है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली। ये सिचुएशन कौन सी है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसमें हार्ट रेट कम नहीं, नॉर्मल हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट कम नहीं, नॉर्मलाइज हो जाएगा, सारी बॉडी के फंक्शंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में चली जाएगी। देखो जब तुम लड़ाई कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। मैं हर बार जब भी पैरासिम्पैथेटिक की मेंशन आता है मैं हर बार बताती हूँ। अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं बता दूं, अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं नहीं, अल्टीमेटली तो हम चाहते हैं कि हम मरे ना, नीड क्रैक हो ना हो, लेकिन वी शुड नॉट डाई, है कि नहीं? Hmm. Hmm. Oh. We are looking for 150 special people to be a part of the special cohort here at ESSA. These people will be trained by founders, business leaders and VCs to build their own companies or to work in leadership positions in startups. The way we do this is in three ways. A new age curriculum that is taught by business experts via the case-based methodology in the classroom, live projects with startups where every student gets to truly understand how जीना चाहते हैं। तो लंबा जीने का एक टेक्निक है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन करके रखना है, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। यस, जितने आपको नहीं चलाना है, बॉडी को बचाना है सिंपैथेटिक कंडीशन से कम होनी चाहिए सिंपैथेटिक कंडीशन, ज्यादा से ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक काम करना चाहिए, तब जाके उम्र लंबी होगी। रिलैक्सेशन में अगर आपका ब्रेन रहेगा, काम रहेगा, तब उम्र लंबी होगी। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा सिंपैथेटिक काम कर रहा है भैया, कोशिश करो फटाफट से पैरासिम्पैथेटिक में वापस आने की। हमें ज्यादा समय इस वाले में नहीं रहना है, है? सीएनएस फिर आगे रिस्पांस देता है, किसको देता है? इफेक्टर को देता है, ठीक है? सीएनएस आगे रिस्पांस देता है किसको? इफेक्टर को देता है। सिग्नल किसकी मदद से भेजा जाता है? कौन से न्यूरॉन्स की मदद से भेजा जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी माने एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन। वापस किससे आता है सिग्नल? मोटर न्यूरॉन लेकर आते हैं और इसको एफरेंट भी यार, जो मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो तो कौन है? न्यूरॉन, ठीक है? एक तो मेरे पास कौन से है? न्यूरॉन है। दूसरे तरीके के सेल्स जो कि मोर देन 50% वॉल्यूम बनाते हैं नर्वस सिस्टम का, है वो सपोर्टिंग सेल भी इनके, बट वॉल्यूम मोर देन 50% बनाते हैं
आते हैं। हमने इस सेल के बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं करनी, लेकिन इस सेल के बारे में बहुत चर्चा करनी है। तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड अंडरस्टैंड कि न्यूरॉन के द्वारा किस तरीके से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। करिए मेरे बच्चों, यस, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करिए। देख रहे हो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो एक न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं। एक न्यूरॉन के यहाँ लिख रही हूँ, न्यूरॉन के दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये और भी बोल सकते हैं, इतने सारे नाम है इसके साइटोन के। देख रहे हो, इतने सारे नाम है इसके साइटोन के। दूसरा, यहाँ से कुछ प्रोसेसेस निकलेंगे, नर्व प्रोसेसेस, जिसको न्यूराइड्स भी बोल सकते हैं। ये जो नर्व प्रोसेसेस निकल रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं। इन प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, जो छोटे छोटे होंगे। कुछ प्रोसेस क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं एंड as the cell body के बाकी नाम मैंने वहां लिख दिए, मैं सारे नहीं लिखूंगी यहाँ पर। ये जो लंबा सा पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं डंडा। डंडा कौन सा है? एक्सॉन। और एक्सॉन की एंडिंग है, तो इसको एक्सॉन एंडिंग बोल लो, एक्सॉन टर्मिनल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है? एक्सॉन एंडिंग बोल लो या फिर एक्सॉन टर्मिनल बोल लो। अब इस सेल बॉडी में से निकलते हैं कुछ प्रोसेसेस। ये देखो, ये छोटी छोटी प्रोसेसेस और ब्रांच है। ये छोटी छोटी और ब्रांच प्रोसेसेस का क्या नाम है? इनको हम लोग बोलते हैं बॉडीज। इन ऑर्गेनेल्स का क्या नाम है? मिसल ग्रैन्यूल्स। मिसल ग्रैन्यूल्स बेसिकली इसका RER होते हैं। ये किस किस जगह प्रेजेंट होते हैं? साइटोन में भी प्रेजेंट है और डेंड्राइट में भी प्रेजेंट है। अगर कोई पूछे मिसल ग्रैन्यूल कहां नहीं है, तो बोलोगे एक्सॉन में नहीं है। RER क्या बनाता है? बता दो फटाफट से। RER प्रोटीन बनाते हैं, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ जो प्रोटीन है वो कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर प्रोटीन है। इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर ये देखो, ये साइनेप्टिक वेसिकल है। ये क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल है, ठीक है जी? ये क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल। तो अगर मैं एक नॉब को बड़ा करके बनाऊं, एक नॉब को मान लीजिए ऐसे बड़ा करके बनाया, तो ये इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स है, समझ रहे? तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये इसके जॉन पे। एक्सॉन इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। वन टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल जो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, दैट इज कॉल्ड एज Schwann सेल। तो मान लीजिए एक्सॉन है, एक्सॉन इज सराउंडेड बाय Schwann सेल।
एक्सॉन बनाइए ना तो हम वाइट नहीं बना पाएंगे। कुछ जगह पर अंदर की साइड पर केमिकल रिलीज करते हैं, तो जहां पर ये माइलिन को रिलीज करेंगे उस न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, जहां नहीं करेंगे वहां से चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा। आपने इंसुलेटर केमिस्ट्री में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, मान लो सोडियम पोटेशियम ने अंदर बाहर करना है, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ माइलिन प्रेजेंट है वहाँ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फ्लो हो सकता है चार्जेस का, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, फिर इस जगह पर होगा, फिर इस जगह पर होगा, फिर इस जगह पर होगा, यानी कि इस जगह पर चार्जेस का फ्लो आदान प्रदान इस मेम्ब्रेन से हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैंडियर बोलते हैं। ये जो है ये एक्सॉन का बहुत वेरी सेंसिटिव पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। ओके मेरे बच्चों, अच्छा अब मान लीजिए इसको कोई मैसेज मिला, तो मैसेज किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, या कहीं भी जा सकता है। याद रखेंगे मैसेज का जो फ्लो है साइटोन से एक्सॉन, उल्टा नहीं जाता है मैसेज कभी, नो, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यार ध्यान देना, जैसे कई बार अब तुम मुझे नाम बताते जाओ जिसको नाम पता है, कई बार न्यूरॉन है यार, न्यूरॉन की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यहाँ तो मैंने डायरेक्शन बता दी कि यहाँ से मैसेज आया और यहाँ से मैसेज गया, ठीक है, देन यहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कहीं से भी मैसेज आ जा रहा है, कहीं से भी चला जा रहा है, कोई आने की जगह नहीं है, जाने की जगह नहीं है, ये ऐसा रैंडम चल रहा है। जहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी, यहीं से मैसेज आ रहा है, ये है, यहीं से मैसेज आ रहा है, यहीं से मैसेज जा रहा है, सिंगल, तो ये हो जाएगा यूनिपोलर। ये सिंगल डेंड्राइट है, वन डेंड्राइट है एंड वन एक्सॉन है, ठीक है, यहाँ से मैसेज आया मान लो, फिर यहाँ चला गया, ये हो जाएगा आपका बाइपोलर न्यूरॉन। दो डायरेक्शन हो गई ना, दो डायरेक्शन हो गई, फिर एक जो अभी हमने बनाया है, ये देखो, एक जो अभी हमने बनाया है कि भैया डेंड्राइट बहुत सारी है, ये भी डेंड्राइट है, ये भी है, ये भी है, यानी कि डेंड्राइट मेनी है, मेनी, ये बिल्कुल था यूनिपोलर जैसा, सिंगल डायरेक्शन, देखो सिंगल डायरेक्शन, आगे तक तो था यूनि, फिर ये बाइफरकेट कर गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये कैसा है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल फैक्ट्री रीजन में, नोज में, ऑल फैक्ट्री रीजन में मिलता है और इनर ईयर में भी मिलते हैं, ईयर बॉडी में सेरेब्रल कॉर्टेक्स,
ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बेटा अभी इतने सारे बच्चे आ चुके हैं, सेशन को लाइक क्यों नहीं किया है? बताओ, सेशन को अभी तक फटाफट आपने लाइक क्यों नहीं किया है? तो कर दो फटाफट से, जितने बच्चे बैठे फटाफट से सेशन को क्या करें, लाइक कर। हमारे सुपर 60 बैच में ये सिर्फ एक बैच नहीं, ये है एम्स तक जाने का स्ट्रक्चर्ड रास्ता। इस बैच में आपको मिलेगा सिलेक्शन किट जो आपके घर तक पहुंचेगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस बैच, नीट संवाद, जूम मेंटरशिप सेशंस एंड सुपर 60 व्हाट्सएप ग्रुप बाय टीम विद्या। और कामयाबी बैच का फुल एक्सेस। हर स्टूडेंट को सही गाइडेंस मिलनी चाहिए और टच करें and after that bright looking skin from D3 try Himalaya brightening vitamin C serum now। एनिमल किंगडम का सवाल पूछते, मैंने एनिमल किंगडम ऑलरेडी करा दिया है। कौन सा ऐसा फाइलम है जहां पर फर्स्ट टाइम न्यूरॉन पर आप बोल सकते हैं नर्व सेल आया? हम लोग बोलते हैं PC स्क्वायर PA क्यूब MEHC। ये लो तो उसको छोड़ दो। एनीवे तो P यानी कि पॉलीफेरा। पॉलीफेरा इकलौता फाइलम है जिसके पास नर्व सेल के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसके पास एक भी नर्वस सिस्टम का सेल नहीं है। पॉलीफेरा पॉलीफेरा इकलौता है, फिर धीरे धीरे यहाँ से तो एडवांस होता गया। ठीक है जी, पॉलीफेरा के पास एक भी नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? यहाँ से हुई है। तो ये क्लास में कर लिया। हाँ, अब बताओ जो हम 11th क्लास में कुछ नया करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, साथ साथ में मैं तुम्हें फोटो भी दिखा दूं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देते हैं, क्विक कनेक्शन देते हैं, एंडोक्राइन केमिकल इंटीग्रेशन देता है हार्मोन्स की मदद से। ठीक है, एंड ये हमने पढ़ना है अभी। न्यूरल सिस्टम हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन से बना हुआ है जो डिटेक्ट करते, रिसीव करते, ट्रांसमिट करते हैं। ये सब मैं कर चुकी हूं। ये देखो, नर्वस सिस्टम इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल हाइड्रा में बहुत ही कम न्यूरॉन से बना होता है। नर्वस सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट जहां पर ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, गैंग्लिया होंगे एंड वर्टिब्रेट्स हम लोग के पास। मैसेज लेकर जा रहे हैं सीएनएस को, वो सेंसरी माने एफरेंट हुए, जो सीएनएस से मैसेज ला रहे हैं वो मोटर माने इफरेंट हुए। बना लिया हमने। फिर वो क्या कहता है कि इफरेंट नर्व फाइबर कहां मैसेज लेकर आ रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सीएनएस टू इनवॉलंटरी रीजन है ना, आपका इनवॉलंटरी मसल्स आ गई, ग्लैंड्स आ गए, ये सब आ गया, स्मूथ मसल्स आ गए। फिर ऑटोनॉमिक को आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया। मोमेंटम बता दिया, जिंदा रहना है तो ज्यादा देर कौन सा चलाना पड़ेगा? पैरासिम्पैथेटिक। सोच के चलाना पड़ेगा। सब तो होता है, इसके वजह से एंजाइटी होती है। क्या ये चीजें जिंदा रहने से बड़ी हैं? बताइए। एक कोई एग्जाम, कोई लड़की, फ्रेंड, क्रश, ये
तो बेस्ट है जब भी लगे कि स्ट्रेस हो रहा है, मतलब जिंदगी कम हो रही है, जिंदगी कम नहीं होने देनी है, फटाफट से अपने माइंड को समझाना भाई पैरासिम्पैथेटिक काम कर, रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो सब कुछ सोचना, टेंशन लेनी छोड़ दो, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक को चालू करना शुरू कर दो। ये लाइफ लेसन है बेटा, लाइफ लेसन। नौकरी ना मिले, छोकरी ना मिले, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिंदगी में, ऑर्गन तक ट्रैवल करते हैं एंड विसरा से फिर वापस सीएनएस जाते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे पीवाईक्यू भी बन चुका है, कि मान लो कोई इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन से जो भी न्यूरॉन्स मैसेज सीएनएस को लेकर आ रहे हैं एंड जो भी न्यूरॉन्स वापस इंटरनल ऑर्गन्स पर ला रहे हैं, तो ये जो सारा सिस्टम बन गया है, इस सारे सिस्टम को हम लोग विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। impulse towards the cell body, डायरेक्शन आ रही है, dendrites to cell body आई, एक्सॉन एक लंबी सी फाइबर है, डिस्टल एंड उसका ब्रांच है, दूर वाला एंड, ये डिस्टल एंड है, ये एक्सॉन का दूर वाला एंड ब्रांच है, वैसे एक्सॉन सिंगल है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, बट उसका एक एंड ब्रांच है, ठीक है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नर्व्स, जिसके अंदर वेसिकल होंगे, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भर के बैठा है। एक्सॉन ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स अवे, तब किसका है, श्वान सेल का, जो कि माइलिनेटेड चीजें कहाँ मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व से मिलेंगी। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल, जो कि माइलिन नहीं बनाते हैं, एंड ये ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलेंगी। अब ध्यान से सुनो, ये इसने इंपॉर्टेंट बात बताई है, में भी माइलिनेशन होती है, सीएनएस में भी होती है, कोई तो सेल आके माइलिन शीट बनाता है। पीएनएस में माइलिनेशन का दायित्व किसको दिया गया है, श्वान सेल को। माइलिनेशन जहां जहां है वो आपको याद रखनी है, अगर पीएनएस में कोई माइलिनेशन है तो श्वान सेल कर रहे हैं, सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में माइलिनेशन है तो हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम के सेल कर रहे हैं। फिर आता है जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है, जो में श्वान सेल होगा, हाँ, यहाँ पर अगर वो पीएनएस है तो श्वान सेल होगा, लेकिन माइलिन नहीं होगी। देखो मैसेज आया 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 यहाँ पे, फिर जंप मारा इसने, फिर जंप मारा सॉल्टेटरी कंडक्शन की, और फिर यहाँ पहुंच गए, जंपिंग कंडक्शन होती है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले थे, हम लोग करने वाले थे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या करने वाले थे बच्चों हम लोग, न्यूरॉन है, ये से लाइन में बैठे हैं, ठीक है, लाइन में बैठे हैं, तो मैसेज कैसे कैसे जाता है, याद रखना है, जो मैसेज जाता है फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट भेजना है, फिर मुझे दिस पार्ट से लेकर यहाँ तक भेजना है ना, तो विद इन न्यूरॉन भी मैसेज भेजना है, ये देखिए, विद इन न्यूरॉन भी मैसेज भेजना है, और इस गैप में भी भेजना है।
कंडक्शन होगी। छोटा भी हो सकता है। मान लो गैप इज बिग, नैनोमीटर है और लेस देन 2 नैनोमीटर है। अगर तो बड़ा है तो इलेक्ट्रिकल नहीं हो पाएगी, जो मैसेज यहाँ तक पहुंचा उसको वहीं रुकना पड़ेगा, यहाँ पर नया मैसेज जनरेट करना पड़ेगा। उस केस में हम लोग केमिकल की मदद लेते हैं, केमिकल कंडक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद लेंगे। और अगर गैप कम है, गैप कम है तो यहाँ से जंप करके ही मैसेज चला जाता है, इलेक्ट्रिकल ही चला जाता है। तो उस केस में गैप कम है तो इलेक्ट्रिकल ही हो जाएगा। मतलब ये जो कंडक्शन, गॉट इट? To work in leadership positions in startups. The way we do this is in 3 ways. A new age curriculum that is taught by business experts via the case-based methodology in the classroom, live projects with startups where every student gets to truly understand how a startup works, and experiences where students build their own startups from scratch. If you are somebody who is interested, you should apply fast. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। है क्या 30? क्या भैया? एवरीवन इज विद मी? क्यों देर से? ये क्वेश्चन है क्या? आपको हर फालतू चीज में इंटरेस्ट है? हर फालतू चीज में इंटरेस्ट है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेरे बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं। सिर्फ इस चैप्टर में यही बच्चों को दिक्कत देता है और इसी में से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं जो तुमको अच्छे से देखने हैं। तो अब मैं आपको बहुत सिंपलीफाइड वे में अगले 10 मिनट के लिए समझाने वाली। क्या आप अगले 10 मिनट फोकस दिखा सकते हैं मुझे? फोकस मुझे बता दीजिए, फोकस का इमोजी भेज दीजिए। 10 मिनट्स के लिए फोकस। Uh, uh, uh. Hi. ये भी फोकस नहीं जताता है। ये मछलियां हैं क्या? तो कुछ ने बंदर भेजा। हाँ, ये मंकी वाला ठीक लग रहा है कि मंकी ने अपने कान बंद करे हुए कि वो और कुछ नहीं सुनेगा।
करूंगी। सेल के बाहर हमेशा याद रखेंगे, सेल के बाहर हमेशा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। सेल के अंदर पोटेशियम आयन होते हैं और सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। अंदर भी पॉजिटिव है बट उसका नेगेटिव भी तो है, तो बाहर के कंपैरिजन में तो कम पॉजिटिव हुआ। इस कम पॉजिटिव को हम लोग क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। देखो हो सकता है बट इस कम पॉजिटिव है तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? नेगेटिव लिखा। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये अवस्था होती है रेस्टिंग स्टेज। किसी भी रेस्टिंग स्टेज में अगर हम सेल को देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं कि बाहर सोडियम आयन ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम आयन और नेगेटिव। तो छोड़ो, अब यहाँ पर बात करते हैं जब भी रेस्टिंग स्टेज चल रही होती है तो सेल में, सेल की मेम्ब्रेन है ना, इसमें द्वार होते हैं, चैनल्स होते हैं। कुछ चैनल्स, कुछ गेट ऐसे होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं। कुछ गेट ऐसे होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं, उन गेट्स को हम लोग बोलते हैं लीकी चैनल्स। उन गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? लीकी चैनल्स बोलते हैं। वो हमेशा लीक करते रहते हैं। तो जब हमें तो पोटेशियम, सोडियम बाहर भी चाहिए, पोटेशियम अंदर भी चाहिए। तो इस चीज को ठीक करने के लिए रेस्टिंग स्टेज पर एक पंप काम कर रहा होता है। इस पंप को हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। ये कहता है भाई तुम मुझे पैसे दो, मैं इस चीज को ठीक कर दूंगा। बाहर दो पोटेशियम अंदर, फिर तुम 1 रुपया दो, 1 ATP दो, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। ये वापस से सही कर दे रहा है, सोडियम को उठा के बाहर फेंक दे रहा है, पोटेशियम को उठा के अंदर फेंक दे रहा है। जो है वो एटीपी से काम करता है। ये सारी स्टेट हमारी रेस्टिंग स्टेज में होती रहती है। ये तो मैंने नॉर्मल सेल के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं हमारे न्यूरॉन को। अब न्यूरॉन मैंने ऐसे बनाया था बेटा। क्या मैं न्यूरॉन को लिटा सकती हूँ? लिटा दे? भाई लाई डाउन, तुम पेशेंट हो, लेट जाओ। लेट गया न्यूरॉन? लेट गया। अब इसकी जो एक्सॉन है, एक्सॉन को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके एक्सॉन को ड्रॉ कर लेते हैं। पोटेशियम आयन होंगे एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे। ये अब कहानी तुम्हें याद होगी। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे जिसकी वजह से नेट चार्ज आउटसाइड पॉजिटिव होगा, नेट चार्ज इनसाइड नेगेटिव होगा। तो लिख ले कहानी, रेस्टिंग स्टेज लिख ले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं रेस्टिंग स्टेज। क्या 지금 바닥을 띄우며 다리를 따라 번져간다. Oh. ओके, तो रेस्टिंग स्टेज ये ऊपर मैंने बनाई है। रेस्टिंग स्टेज में बताइए आउटसाइड क्या ज्यादा है? रेस्टिंग स्टेज में फटाफट से बताते जाओ।
Au! Ha! Ha! Mm. नेक्स्ट टाइम आ जाइए। मान लीजिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही इतने तक का मैसेज आया, मान लीजिए आ गया, तो वोल्टेज गेटेड, लीगी चैनल नहीं, ये वोल्टेज गेटेड है, इनको स्पेसिफिक वोल्टेज मिलेगी तभी खुलेंगे। चैनल माने गेट, मेम्ब्रेन के अंदर ये जो एक्सोन लेमा है इसके अंदर गेट है, ये स्पेसिफिक वोल्टेज पे ही खुलते हैं, तभी उनका नाम है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ओपन हुए तो सोडियम अंदर भागेगा। सोडियम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भर भर के अंदर आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज भर भर के अंदर आएगा तो मतलब अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर नेट चार्ज कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर सोडियम अंदर घुसा तो इनसाइड चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड आउटसाइड कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। भाई तो उल्टा हो गया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। क्या जनरेट हो गया है मेरे बच्चों, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई है, उल्टी हो गई है। यस, अब जब मैंने इसका निकाला, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल निकाला, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था -70 आ रहा था, इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एक्शन साइड पे नेगेटिव। यस और नो, वन एंड द सेम थिंग, कोई ज्यादा डिफरेंस कौन कह रहा है मेरे नोट्स शो नहीं हो रहे टेलीग्राम पे? ना बिल्कुल शो हो रहे हैं, टेलीग्राम पे मैंने भेजे हुए हैं आपको नोट्स। आपको थोड़ा लेट भेजे थे बट भेज दिए, आज वाले आज आ जाएंगे। अच्छा, अब मान लो मैसेज आ गया, यहाँ पर अब फटाफट खत्म कर दे बेटा। यहाँ तक मैसेज आ गया, ये वाला हिस्सा एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब इस अगले हिस्से में एक्शन पोटेंशियल करेंगे, फिर इस अगले हिस्से में करेंगे। मान लो ए है, बी है, सी है। जब ए पे एक्शन पोटेंशियल आ गया, बी की बारी आ गई, तो ए को क्या करें, ए को वापस से रेस्टिंग पे लेकर आओ ना। जब बात वापस लेकर आएंगे, पिछले हिस्से को वापस रेस्टिंग में कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज गेटेड, अब पोटेशियम चैनल खुलेंगे। going to lead to efflux of potassium, है कि नहीं, efflux of potassium। अब पोटेशियम कैसा चार्ज है, पोटेशियम बाहर जा रहा है बेटा, पोटेशियम अंदर था, पोटेशियम जो है वो बाहर
तो आउटसाइड पॉजिटिव था, इनसाइड नेगेटिव था। हमने फिर से आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव कर दिया। हम वापस से रेस्टिंग वाली सिचुएशन में चले गए कि नहीं चले गए? चले गए। हम तो यही चाहते थे कि बाहर पॉजिटिव हो और अंदर नेगेटिव, यही होना चाहिए। रीपोलराइजेशन हो गई, लेकिन एक गड़बड़ अभी भी हो गई। एक गड़बड़ अभी भी है। Piecing together study materials for exams and clinicals, the UWorld Medical Library brings आयन उल्टे हो गए भाई। नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम अंदर होना चाहिए, ऊपर देखो यहाँ पोटेशियम बाहर भाग गया। नॉर्मल कंडीशन में सोडियम बाहर होना चाहिए, यहाँ सोडियम अंदर बैठा है। आयन्स गड़बड़ है। इन आयन्स को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? सोडियम पोटेशियम पंप चलाएंगे यहाँ पर। यूज करके है ना, तो ये आपको यहाँ पर काम करेगा जिससे सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर रहेगा। This is how electrical transmission occurs. ऐसे electrical transmission होती है। क्या समझ आया? Yes. I am teaching from basic only Zahid. जिसको रिवाइज करना है, जिसको फर्स्ट टाइम पढ़ना है, उसको भी समझ आएगा। अगर आप कक्षा 11वीं में भी हैं, आप अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं 11th का, आपको ये लेक्चर समझ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं बेसिक से ही करा रही हूँ, ठीक है जी? Yes, this is membrane potential किसमें चलता है? नेगेटिव में चलता है। एक बार इसको हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। तो -70 मान लीजिए यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट्स। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम लोग मिलीवोल्ट्स में ले रहे हैं, ठीक है? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लीजिए यहाँ पर। फिर एक्शन पोटेंशियल आया। ये देखो यही बता रहे हैं, हम इसी को ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है, फिर एक्शन पोटेंशियल आया और ये +35 मतलब ऊपर चले जाओ, मान लीजिए 35 यहाँ पर। मान लीजिए कितना? याद है, मैं आ ही रही थी। आ रही थी बाय ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम से आ रही थी, लेकिन जितनी देर ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम होना चाहिए था, इतनी देर होना चाहिए था, तो गलती से थोड़ी ज्यादा देर पोटेशियम के चैनल्स खुले रह जाते हैं और ये ग्राफ थोड़ा और नीचे चला जाता है। पता है किस लेवल तक चला जाता है? -100 तक के लेवल तक हाइपर पोलराइजेशन। हम उसको फिर सोडियम पोटेशियम पंप से वापस से -70 पर ले आते हैं, ठीक है? ये ग्राफ मैंने हाइपर पोलराइजेशन के लिए समझाया है कि भाई जो पोटेशियम चैनल है वो -70 तक
আমি তো বুঝলাম না, কি আনবে ছেলে মেয়ে? জিজ্ঞেস করবো ভালো করে। কাগজে ফুল দিয়ে জলদি এনেছিস? ফোন করতে মানে দে। আমি না কি ওইটা দিয়েছি নীল পাখিটা। শয়তানি করে। কিন্তু ফ্রেশ তো তুই নিজে দেখে ফ্রেশ দেখতে তুই নিজে দেখে আনবি? না শয়তানি করছে। দাম বেশি নেবে। এদিকে ব্যায়াম পাখি দিয়েছে। এটা নীল হবে না গোলাপি হবে। এটা না গোলাপি হবে। নীল হবে না। একটা হাড়ি দিতে হবে হাড়ি। ক্যালসিয়াম খাওয়ালে যা খুশি একটা বলেই বলে দাও। আপনি কি করবেন? না যেটা আছে সেটা রং দেখবে না দেখবে এই তিনটে রঙের মধ্যে একটা যাবে না রং দেখবে যে রং দেখবে যে রং না দেখে আমি ঠিক ছেলে না মেয়ে না দেখে রং চলে ভাই দিলাম হয়ে যাবে
Au! Ha! Ha! দুপুরের খাবার খাবি না, রাতে অল্প খেতে হয়, দুপুরে পেট ভরে খেতে হয়। দুপুরে খাবার ঠিক করে না। ঝড় হতো, মারধর করতো, 3 দিন অনশন চললো, 3 দিন খাবো না, শুধু জল খেয়ে থাকতাম। এখন অনশন চলে না। মারও দূর না, যাই হোক খেতেই হবে, না খেলে আমার নারীর মুখটা আগে তো পেটের অবস্থা ছিল না, এখন যা পেটের অবস্থা, এখনই না খেতে হবে। আপেলটা দাম বেশি, ছাত্র খাওয়া লাগতো পানি না, এক প্লেট পানি। Uh, ha. Uh, ha.
আমরা চটকাতে কি করে ভাবে ওর কথা মারছি দুটোই গরম আছে মনে ঠান্ডা বাইরে গরম আজকে আমার গরমই লাগছে রাতে কেমন গেছে Hmm. Ow! Ow! Ha! Ha! Mm-mm-mm. Um, কি হবে করা তো যাবে কিন্তু আবারও এরকম করবে পুড়িয়ে দিতে হবে ওখানটা কেটে Zygote do not undergo reduction division immediately in bryophytes, which is correct. In bryophytes, the dominant phase is in the life cycle of gametophytic plant body. Life cycle is part of the life cycle strategy where the sporophyte develops from the zygote before spore formation. তাই তো খারাপ লাগে স্পিকার Character proposed by Lemon. Inheritance of acquired character. Inheritance of acquired When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cells and generative cell. The generative cell is bigger and has abundant food reserve and small, and it is large, spindle-shaped nucleus. Vegetative cell have large spindle-shaped nucleus. RNA polymerase associate transiently with initiation factor sigma and termination factor.
polymerase 2 transcript precursor of mRNA and hnRNA. The condition is present, Fabaceae family. With many ovules, double single condition is present in Fabaceae family. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Oh. Oh. Ha. Ha. Mm-mm-mm. Oh. Ha. Ha. Mm-mm-mm. Vascular bundle surrounded by scleron kinetose bundle sheath is feature of monocot stem. Monocot stem scattered vascular bundle है. Vascular bundle surrounded by scleron kinetose bundle sheath is a feature of monocot stem. Root have ना stem have monocot scattered MS. গ্রাফিন ফলিকল থেকে এলএইচ রিলিজ হচ্ছে অ্যান্টিকোগুলেশন করবে আর এদিকে কর্পাস লিউটিয়াম ফর্ম করবে এন্ড দিস সিক্রিট প্রজেস্টেরন এলএইচ Find out the incorrect match. Anal circuit and segment. Anal circuit and segment. Spiracles, 10 pair of spiracles. Spermatheca, 1 pair. No, female cockroach, single median structure. Spermatheca is a single median structure in female cockroach. The hepatic city, 6 to 8 number, not pair. 6 to 8 in number, but not pair. By fusion of 6 segments. Head is triangular in shape and formed by the fusion of 6 segments. 7th, 8th and 9th sternum form the ental pouch in female cockroach. 7th sternum along with the 8th and 9th sternum together forms throughout the life. Okay, vertebral column is cartilaginous in dogfish. Chondrocytes, for example, osteocytes. Notochord is not persisted throughout their life. Notochord is replaced. Echinodermata. Echinodermata. Lily. Okay, starfish have a sea urchin. Sea urchin is mollusca. C here is mollusca. Seahorse is chordata and sea lily. That's an antidot lily. Ascaris sea urchin and C for Cucumeria sea cucumber and E for Echinodermata.
Hypophobia, Ascaris is brittle star, Ophidia brittle star, and Ascaris brittle. হ্যাঁ হুম এখন 1555 29 এখন থেকে স্বাধীনতা হারবানি নিয়েছে জানি আমি বললাম বলে না 30 চলে কই তুমি এটা হুম 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 ও 91 বাপ কত নিয়েছে 7 কত stage of sewage treatment shown below. Define the stage of sewage treatment shown below. This is primary treatment, secondary treatment. It is a bit of secondary treatment. At stage of sewage treatment shown below. It is secondary treatment is pictured. Is connected to the pelvic girdle in the sacral region. Vertebral column is connected to the pelvic girdle in the sacral region, not coccygeal, the sacral region. Different species, but both belong to the same genus. A group of related species which has more characters in common in comparison to the species of other genera. Right explanation is incorrect. Monocot root more than 6 vascular bundles. Well developed and large in monocot root. Vascular bundle is more than 6. This is monocot root and scattered vascular bundle is monocot stem. Pith is well developed and large in monocot root. This is the structure of cone or strobilus. This is branch and it is rhizome. Instead of the rhizome, it's rhizoid. This is rhizome structure of rhizome. Velvet exhibition is a line of the
stamen and ovary is superior. Leaves originate from shoot apical meristem, correct? Leaves are arranged in an acropetal order. This is correct. Some plants of arid regions like Euphorbia modify their stems into flattened and contain chlorophyll. No, flattened stem is present in Opuntia and Euphorbia. They have cylindrical stems. When a shoot takes transform nuclei and gametes are involved in the double fertilization respectively. Nuclei and gamete. There are zygote n plus n and primary endosperm nucleus have 2n plus 1 plus n. The gametes 3 gametes needed. 5 segment which are unrelated for embryo development in flowering plant develops at micropyle end of the ovule. Early stages of embryo development differ in monocot and dicot. No, early stages of embryo development are similar in dicot and monocot, which is unrelated to the embryo development. Okay. In most of the plants, zygote divide first by of the ovule. Okay. Embryo develops at micropylar end of the ovule. Embryo develops at the micropylar end of the ovule. Ectoparasites on some fishes, correct? Sucking and suctorial mouth with jaw. No, not with jaw, it is without jaws. Scales are absent, correct? Paired fins are absent. Cranium is absent, it is also correct. For Cyclostomata, cranium is absent. An open circulatory system present. Cranium absent and open circulatory system is present. Monoecious and platyhelminthes. Is Ashkelvin. Animal A says, when we were larva, we had all chordate characters, but when we develop into adults, we have only single chordate character, that is pharyngeal gaze. Animal A is Ascidia, Urochordata is Ascidia, that means all in larval stage only. Animal A is Ascidia, Urochordata.
Hmm. Hmm. Mm-hmm. Oh. Structure. Some basic concept of structure. Structure. We think of chemistry. I don't know. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Oh. Next is industry. This is also class. 8. Number 8. Uh. Uh. Ha. Hmm. One compound containing oxygen and containing nitrogen. This is of 12. Next, atomic structure, chemical kinetics, chemical kinetics, chemical bonding, kinetics. Oh. Ha. Ha. Mm. Basic concept chemistry, atomic structure, chemical kinetics, equilibrium, chemical bonding, electrochemistry, total. This is also mixture. D block, group 13 to 18. D block, coordination. Practical. This is 12. Inorganic compounds, more salt, nomenclature, isomerism, general organic purification. This is also mixture. Radio test 3, also mixture. Group 13 D A block coordination. Okay. Liquid chemistry, preparation of inorganic compounds. This is salt and nitrate, nomenclature. Nomenclature, isomerism, GOC, purification.
Chemocant is an equilibrium. Also mixture. Can you test two as mixture? 11. Oh. Hmm. 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 Oh. Um. Next test 5. Chemical thermodynamics redox reaction. Chemical thermodynamics. Um. 11th data I will come to table. 12th answer correct. Test. Iron 3 oxide can be reduced. Unbalanced chemical reaction Fe2O3 plus 3CO equal to 2Fe plus 3CO. With the number of moles of CO required to form 1 mole of Fe from an oxide. 1 mole Fe that's equal to 3 by 2 moles of CO. That means 1.5 mole of CO. Okay, insulin contains 3.4% of sulfur by mass. The minimum molecular weight of insulin is
is the minimum molecular mass of insulin, that is equal to 32, and that is solve করতে হবে, solve করে answer আসছে। Mass can neither be created nor destroyed. Law of conservation of mass. Okay, a compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. Law of definite proportion. Correct. When gases combine, they do so in a simple ratio by weight. Taylors's law. Volume same, temperature and pressure. The statement for okay. Compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. Law of definite proportion. Equal volumes of gases at same temperature and pressure contain same number of molecules. Avogadro's law. Ratio of vapor density of two gases 1:6. Ratio of their molecular weight would be molecular weight same. The same 1:6. Let mass of electron is half, then mass of proton is 2 times, and mass of neutron is 3/4 of original masses. The new atomic weight of oxygen 16 atom would be the same process but 8 electron not used in calculation of atomic weight. Okay, each the new atomic weight would be atomic weight equal to 8 proton plus 8 neutron into 1 out of 10. Why 1 out of 10? Select isoelectronic species. Isoelectronic species D2. D2 is equal to 2 into 2 plus 16. That's equal to 20. D2O atomic mass 2 into 2 plus 16 is equal to 20. The neutron 2 into 1 plus 8, that is 10. Total N. The total neutrons. That is total. Oh. Hmm. 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 Oh. Select the isoelectronic set of quantities: potassium plus sulfur minus 2, scandium plus 3. Okay, sodium plus H3O plus NH4 plus. Okay, say CO2 H3O plus NH4 plus. Let's select the isoelectronic short for the isoelectronic picture. Except C. The fourth is 2, then third line is n equal to 5, 32, 2. So 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square.
Then number of lines in infrared regions. In a sample of hydrogen atom, electrons makes transition from fifth excited state to up to ground state, that is n equal to 1. Fifth excited state is n equal to 6. Make transition. Okay. Then producing all possible type of photon. The number of lines in infrared regions are. Measurement of the electron's position is associated with an uncertainty in momentum, which is equal to 1 into 10 to the power minus 18 grams semi per second. The uncertainty in velocity of electron is okay, P is equal to m cross v, so delta x into delta m into h into v. Consider the following statements. Electron density in the xy plane in 3D x square y square orbital is 0. Have electron density not 0. This is incorrect because they have electron density not 0 in the xy plane, not 0. Electron density in the xy plane in 3D z square orbital is 0. This is also. Ow! Ha! Ha! Which of the following statement is not correct? Bond order of SO4 2 minus and O2 minus are similar. This is correct. This is similar. Number of p-pi bond in SO2 and SO3 are similar. Not correct. Elements like represent the main group element of the periodic table. This is not represent the main group element of the periodic table. In the reaction. In the reaction of BF3 plus NH3,
Yeah. Hello, doctor. Ha. Hmm. Uh, uh, uh. Ha. Hmm. Ha. Hmm. লিয়েটাই তো নেই, প্রিজমটাই তো নেই। Um. हेलो, वेलकम टू माय लाइव, फटाफट डबल टैप कर दो, डबल टैप कर दो। जल्दी से डबल टैप कर दो, डबल टैप ऑन योर स्क्रीन, डबल टैप ऑन योर स्क्रीन। একই গতিতে চলছে। Oh. Ha. Ha. Mm. Uh. Ha. Hmm. VF3 is sp2 trigonal planar structure. NH3 ammonia is in is changed, which is correct. Regular geometry of VF3 is changed.
Electronic geometry of NH3 change. Electronic geometry of NH3 does not change because sp3 to sp3. Okay, bond angles of FBF increases, not increases. FBF bond angle decreases. NH and H bond angles decreases. H and H bond angle. CH3Cl, then CH3F, then CH3Br, then CH3I. Okay, order of dipole moment. Order of dipole. Which of the following has minimum vapor pressure? Minimum vapor pressure. Vapor pressure inversely proportional to boiling point. So boiling point of SbH3 is maximum. So vapor pressure of SbH3 is minimum. Vapor pressure of SbH3. ClF3, H2O, HCF5 minus, I3 minus, BCl3, HCF4, SF6, etc. Element type. How many are planar structure? How many of the following are planar structure? XEF2 is a planar. Yes, it is planar. Then it has 7. These are 7 structure which is planar. SF4. SF4 is not planar because one lone pair is present. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 things are part 5. Here there is 6. BCl3 is also planar structure. I3 minus is a planar. Which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then XEF5 minus. CF5 minus conta. Pentagonal planar. This is pentagonal planar. Here also H2O is planar. Actually. One angle of the following formula. Okay. One angle lone pair হচ্ছে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ ফ্লোরিন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ ঠিক আছে এটা ফ্লোরিন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন বন্ড অ্যাঙ্গেল বিটুইন these two decreases both decrease হচ্ছে বাট কোনটা বেশি ডিক্রিজ হবে বেশি ডিক্রিজ হবে যেটা ডিফারেন্স বেশি যেমন এটা -4 ফ্লোরিন -4 this is -3 so difference Uh, ha. electronegative central bond angle increases electronegativity বেশি থাকলে central bond angle increase হবে ঠিক আছে H3 is more electronegative so
molecule has only pi bonds, correct? The sp mixing is supposed to be absent in C2, then it will be paramagnetic. Not correct explanation. Okay. These are true but not correct explanation. So next is order of IP. Ionization potential in 13th group is boron, aluminium, ionization potential boron, thallium, gallium, aluminium, indium. This is the correct structure. Okay. Irregular trend in ionization enthalpy is due to the transition contraction, lanthanide contraction present in 13th. Positive charge by negative charge. Positive charge যেটা বেশি হবে সেটার ionization energy বেশি হবে. Ionization energy is proportional to Z effective. Okay. Which group the periodic table does energy 1, then 2, then 3. So 2 থেকে 3, then 2. 2 is mainly due to 2. Hmm. Hmm. Mm-hmm. In Dumas method for estimation of nitrogen, 0.25 gram of an organic compound have 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 725 mm of pressure. The aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm. The percentage of nitrogen in the compound is. Compound B2 of nitrogen divided by mass of organic compound into 100. Okay. T1 is equal to P2 V2 divided by P2. First tension of hydrogen. Okay. Pressure P1 is equal to minus 25. P1 into V1 is 40 ml divided by T1. Temperature is 300. That is equal to P2, that is so sharp, is to 98 Kelvin. To 98 Kelvin. .76. Okay. Next is, which one of the following is the most acidic compound? Which one of the following is most acidic compound? Most acidic compound, it is act as a double bond, that means 4n plus 2.
Mostly acidic state. So most acid, that means which donates H plus proton first most easily. So proton donate করার পর এটা কি তৈরি হচ্ছে, proton donate করলে সেটা নেগেটিভ তৈরি হবে, and minus দিলে 4n, that is anti aromatic. Also minus দিলে 4n, that is anti aromatic. That is minus দিলে এটা হবে aromatic compound 4n plus 2, and CH2CH2CH is none of this. Lone pair aberration rule, that means sigma pi lone pair and plus charge. Okay, it means এটাতে also এটা also. Most stable carbon for the following include sigma and sigma, no resonance. Sigma and sigma also no resonance. তারপর sigma pi lone pair, sigma pi lone pair, আর এখানে also no resonance. এটাতে resonance সবথেকে বেশি হচ্ছে, mostly stable because of resonance. Okay, and the second orbital also. তারপর next হচ্ছে which is not correctly matched. Correct. After that, Cl, chlorine is not functional group. OMe is functional group. OMe functional group है. Chloro 4-methyl anisole, correct. NO2 is not a functional group. It is substituent. No priority numbering, lowest locant rule only. NO2 is not functional group. This is not functional group. Functional. So 1, 2, 3, 4. 3, 4 dimethyl. This is 1 chloro and 2, 4 dimethyl nitrobenzene. This is 1 chloro 2, 4 dimethyl nitrobenzene. 1 chloro 2, 4 dimethyl nitrobenzene. Okay. Next is NO2 is not a functional group, but it's a substituent and no priority for this. Numbering is for Hmm. Hmm. Mm-hmm. select the incorrect match of IPC name with the following structure. For dimethylhexane is the correct name. 2, 4 dimethylhexane. This is E2. So numbering according to this is C and C. So this is the primary function, primary parent carbon chain. Parent carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
CH3 in L. Okay, CH3COOMe, methyl ethanoid. This is methyl ethanoid or alkyl alkanoid. So alkyl no 8 contact. This is methyl, this is ethanoid. This is correct alkyl alkanoid. Okay, CH double bond CH3. So pent 3 in one ion. Pent 3 in one ion. Okay, this is also correct. What type is the name of the following compound? CH3CH2, CH, and here we are C double bond O or CH2. This is alkyl alkanoid. This is alkyl alkanoid. OO R dash is alkyl part and this is alkyl. Methyl 1,2 bromobutane. Methyl. So methyl. Which one of the following compound will not be soluble in sodium bicarbonate? Will not be soluble in sodium bicarbonate. Have to clear this one. যেখানে OH phenol soluble হয়. Okay, sodium bicarbonate reaction. Which one of the following compounds will not be soluble in sodium bicarbonate? Ortho nitrophenol. Not be soluble. Basic or less basic. Weak acid. Because OH is basic. OH basic. Basic এর মধ্যে nitrophenol দিয়েছে weak acid হয়েছে. Okay. A compound whose molecule has a D configuration will always be dextrorotatory. A compound whose molecule has D configuration will always be dextrorotatory. Not this correct. This is not correct. Compound having D configuration is always rotate the plane of plane polarized light in clockwise direction. This is correct statement, but Clear configuration are the arrangement of atom in space. Dextro or levo has how the compound interact with plane polarized light. No relation between dextro and levo DL. Okay. Is optically active, both 1 and 3, because they divide in both directions. Plane polarized light, plane of symmetry present, optically active হবে both. No, not this.
এটাতে পিওএস নেই, টোটালি অ্যাক্টিভ হবে, এটাতে পিওএস নেই। ওকে, এটা এখন যদি হয় ব্রোমিন ব্রোমিন থাকছে, আয়োডিন আয়োডিন, এটাকে কাট করা হলো, কাট করা হলে এটার মধ্যে পিওএস থাকছে। ওকে, 2 তে পিওএস থাকছে, এটা ইজ ইনঅ্যাক্টিভ। ওকে, আর এটার মধ্যে NO2 CH3, এটা হচ্ছে CH3 দেন NO2, তো CH3 CH3 NO2 কাট করা হলে পিওএস অ্যাবসেন্ট। সো 1 and 3 is the correct answer. Sure, not correct. It is and 2 are diastereomers. This are diastereomers. This is also correct. One optically active. This is 3 active, but this is really inactive. CH3C111O plus and CH3C plus double bond O. Okay. Correct order of stability. Correct order of stability is. So এটাতে covalent bond more থাকছে, এটার মধ্যে এটাতে covalent bond less. Octet complete for that and octet incomplete for that. How is it? Okay. CH3 মধ্যে this is 8 electron species carbon. CH3. Question. This is 6 electron species, 8 electron, then 8 electron. And then CH2, 8 electron, double bond O. It is one lone pair, এটার মধ্যে আছে 2 3 4 5 6 7 8. Which of the following have R configuration? Which of the following have R configuration? Okay, for A to B, right hand side. Right hand side is it is at 90-degree angle. Then wedge and dash. Right. Oh. Total number of cyclic structural isomers possible for compound having molecular formula C6H12 is. C6H12 have 1 DU, that is cyclic structural isomers. Okay, C6H12, 6 carbon, 6 ring, the 5 ring and 1 methyl, 4 ring and 2 methyl present, 4 ring, 2 methyl different, 4 ring, 2 different. And 1 isopropyl also, and 1 cyclomethylpropyl ethyl also. Okay. Alpha carbon having sp3 alpha carbon যেটা, it is alpha carbon. This is alpha carbon. This carbon sp3 থাকতে হবে, at least 1 alpha hydrogen থাকতে হবে. This is sp2, not sp3. This is sp2. H2O, CHO. Now next is double one in double bond. All sp2, no alpha hydrogen. All sp2, no
COH. So this will tautomerize to form CH2CHO. Phenol tautomerases. Oh. Ow! No. uh, uh, uh. Hi. Hmm. The value of delta G naught for a reaction having equilibrium constant K greater than equal to 1 would be, okay, delta G is equal to delta G naught will at equilibrium delta G naught equal to 0 and delta G is equal to minus in RT ln K equivalent. This 1 and ln K equivalent that's equal to 0 হবে. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Oh. What will be the entropy change for freezing of 10 gram of water if enthalpy of fusion of H2O change for freezing of 10 gram of water. If enthalpy of fusion of H2O solid is 80 Kelvin per gram, this Kelvin per gram, and melting point of ice is 273 Kelvin at 1 atmospheric pressure. What will be the entropy change for freezing of 10 gram of water? Divided by delta. Delta is of freezing is equal to minus delta H of fusion or delta H. This is the enthalpy of fusion. Is of freezing. This is freezing.
equal to minus of delta H fusion. So delta H freezing total is equal to minus of delta H minus of 80 calorie per gram into 10 gram for 10 grams calorie per gram. So calorie को करते हैं 10 grams. It is minus 800 calorie, which is delta is equal to minus 800 divided by 20. Vaporization of 90 gram of water at 100 degree Celsius will be value of delta U. For the reversible isothermal vaporization of 90 gram water at 100 degree Celsius will be delta H of vaporization there also. Value of delta U will be delta H is equal to delta U plus delta into RT. So delta U equal to delta H minus RT. So the reaction will be into delta M into R to 25. Minus 2.1, that is 37.7. 37.7. Okay. This is for 1 mole. This is for 1 mole. And 80 gram. This is 5 mole. 80 gram. This is 5 mole. 5 into after 188 is the correct answer. 188. So change in entropy is more than 0. Okay. Sulfuric acid in a bomb calorimeter, delta U and WR. Okay. Voltage is equal to 0 because in bomb calorimeter, volume is constant. Volume is constant, so volume equal to 0. And so 1 sulfuric acid bomb calorimeter, heat is released. And is negative and W is 0. So U is also negative. For chemistry we use U is equal to Q plus W. Delta G is equal to 0. Delta G naught is equal to 0. No, at equilibrium. Is not correct, and the delta S total is equal to 0, correct. Delta S total at equilibrium is 0, but delta S of universe increasing, delta S of system equal to 0. Increases. And delta S total equal to 0. So A and B are correct. Double tap on your screen, double tap on your screen.
consider the following reactions. CS plus O2 equal to CO2 plus H. And CO plus H. Okay, the heat of formation of COS. Heat of formation of CO. Okay, in this case, both are isothermic process. So heat is released in these two cases. The heat of formation of CO, heat of formation of CO. So minus of H1 minus and H2. That's it. Heat of formation of H CO. CO is the formation of a used to put as a CS. Heat of formation of CO, that is CS plus O2 in and then plus. And then plus 5. That means y minus x is the answer. Calculate the enthalpy change for following reaction. Bond dissociation enthalpy delta H of reactant equal to delta H of product. Reactant minus product. H3 of CH3. CH minus 3x. Uh, uh, uh. Hi. Minus delta H of product of the other present there is CH3 and CH here. So they both will cancel out. Okay? CH CH cancel out हो जाएगा. Then another CHO. CHO double bond होता है C then double bond O. CH then N. So CH1 এটা চুনো minus product. So CH1 এর জন্য X. Then it's C double O bond. C double Hmm. Hmm. Mm-hmm. Hmm. Hmm. Mm-hmm.
Hmm. Hmm. Mm-hmm. Uh. 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 Hi. Hmm. Uh. Uh. Hi. Hmm. 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 Mm-hmm. Uh. Um. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Uh. Um. Um. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Uh. 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 Hi. Hmm. Oh. Ha. Ha. Mm-mm.
डबल टैप कीजिए, फटाफट डबल टैप कीजिए। सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डबल टैप ऑन योर स्क्रीन, लाइक कर दो, फटाफट एक लाइक कर दो। Uh, ha. Hmm. Uh, ha. Hmm. Minus 2x minus y minus of x, that is v plus a minus x minus y minus of v plus a minus of x. That is a great answer. Zero point 0.1 HCl is neutralized by 500 ml of 0.1 m of NaOH aqueous. Kilojoule per mole. Again, that is mole into minus 57.1 kilojoule per mole. Okay, heat of neutralization. So and how I will neutralize n A is equal to n of A. That means all will be neutralized, and 500 ml divided by total volume of 500 into 0.1 divided by 10. And the value of a bond energy is given. The heat of formation of N2H2 will be N2H2. So N2H2 will be M, the N single one M, then H and H, N2H2. Heat of neutralization of perchloric acid HClO4 with NaOH is same as that of HCl with NaOH. Strong acid, strong acid. Okay, heat of neutralization of perchloric acid HClO4 with NaOH is same as that of HCl with NaOH. Both HCl and HClO4 are strong acids. Following reaction is not intramolecular redox reaction. Which reaction is not intramolecular redox reaction?
what is the volume of 0.1 in potassium permanganate solution required to completely oxidize 100 ml of 0.5 molar ferrous sulfate oxide solution in acetic medium? Ferrous sulfate N is equal to 1. Ferrous sulfate means Fe2 plus. That forms to Fe3 plus. That means N factor is equal to 1. N of A is equal to N of B. That means 0.1. Discriminator is only oxidation. Discriminator is oxidation status plus 7. H2O2 hydrogen minus 1 and oxygen minus 2 থেকে plus 2 পর্যন্ত হতে পারে oxygen minus 1 oxygen minus 2 থেকে plus 2 both in the disproportionation process 2Cu plus get Cu2 plus plus Cu. How many electrons have been transformed? 1 electrons are transformed in this case. In the disproportionation reaction, 1 electron is transformed, not 2. O2 equal to Na2O. 2 Na plus O2 equal to Na2O. Redox reaction. It's not a redox reaction. It's a redox reaction. Yeah. One oxidized. Oxidation number of oxygen atom in both O2 and O3 is 0. Oxidation number of oxygen atom in both O2 and O3 are 0. In OF2 oxidation number of oxygen is plus 2. Yes, it is plus 2. Both assertion reason are correct. Okay. But minus 3, that is 2 electrons. 2 is okay, 2 into 2, that means 4 electrons. That's it. What is the equivalent mass of AsO3 in the following reaction? Okay. So we're going to change for the AS2 থেকে plus 5. Four plus 4 is equal to 28. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Gaseous phase reaction to NO থেকে N2 plus O2 delta H naught is equal to minus something. So exothermic reaction and inversely proportional to temperature. Which statement is correct?
regarding true or false. For a zero order reaction, average rate and instantaneous rate will be same. For zeroth order, it is same. Zero order reaction must be an elementary reaction, not must be. Linearly with time, this is also false. Okay. Elementary reaction can be negative. False. Rate of the first order reaction decreases linearly with time. This is also false. Reaction decreases linearly with time, not decreases linearly with time. For a reaction, reaction to x plus y equal to z plus y, z plus w, I is equal to the rate constant of a reaction depends on temperature and catalyst. The rate constant of a rate depends on temperature and catalyst. For an exothermic reaction x to y, the activation energy of forward reaction is 30 kJ per mole. If enthalpy change delta H for the reaction is minus 20 kJ per mole, then activation energy of backward reaction is in kJ per mole. The delta H of reaction equal to EA of forward minus EA of backward reaction. Okay, EA of forward minus EA of backward reaction. So minus 20. Second, concentration of R becomes 0.6 molar. Then the rate constant of reaction is RO minus RT is equal to KT. It means RO minus RT is equal to KT. Right. Minus RT is equal to KT. Means 1 minus 0.4. How can 1 minus 0.6? 1 minus 0.6 is equal to 0. Means 1 minus 0.6. Its concentration becomes 0.6. Concentration becomes 0.6. Concentration becomes 0.4. That's it. Of 99% of the reaction is given by if the rate constant for our first order reaction is K, the time required for the completion of 99% of the reaction is given by time is equal to 99.9, not for 99, 0.693 divided by K into 100. For zero order reaction, not minus 80 divided by 2. Unit of rate and rate constant is same for zero order reaction. This is also correct, both are correct.
Ha. Hmm. Nuclear dissociation and total equilibrium pressure for a given reaction into O3, NO plus NO2 is alpha square divided by 1 minus alpha square into P total. Has gas is present in a 2 liter vessel. The active mass of HI is active mass. More ice melt, the pressure on the ice is increased. H2O solid to liquid, which is the following second true. Pressure increases, equilibrium shift towards more density. Shift towards more density. PCl5 to PCl3 plus Cl2. Calculate the total moles of equilibrium at equilibrium 10 moles of PCl5 are heated. Given alpha is equal to the PCl5 C00, then C minus C alpha, C alpha and C alpha. So 10 minus 10 into 5 by 100. So this is 5, 5 and 5. Total moles is 15. In the system P AC is same because Q squares R is equal to 4Q square into R dash rate dash is equal to K by 4. Uh, ha. Hmm. Uh, ha. Hmm. 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 Mm-hmm. Um.
reaction of ethanol on acetic anhydride is an example of ethanol plus acetic anhydride is nucleophilic substitution reaction. Which compound releases CO2 from NaHCO3? NaHCO3 sodium bicarbonate is a weak base that reacts with strong acid only. So strong acid is OH. Which does not give dichromatic test. Primary alcohol, aldehyde, secondary alcohol, ketone, but tertiary alcohol, nothing. Which one of the following is D sugar? Which one of the following is a D sugar? OH. D sugar means fast chiral carbon, alpha, beta. Last chiral carbon, DL. Okay, which is D sugar? First chiral carbon, right side. Phenols, carbonic acid, carboxylic acid, and water, strong acids. Plus Grignard reagent है alkanes. So you are alkanes. Arrange the following in the correct order of reactivity towards SN1. Reactivity towards SN1. This is carbocation having 7 alpha hydrogen. This is carbocation having back bonding. Next is carbocation having 2 alpha hydrogen. Next 4 alpha hydrogen. And this is resonance also. This 4 alpha hydrogen. Then 2 sorry 1. This CH2 and NH2 and the basic strength vibration. In a group, nucleophilicity is proportional to size. In a group, nucleophilicity is proportional to size, and O is an SH, SH more than O is an iodine. Hydrogen plus 1 and F. Minus 1, hydrogen plus 1 and F. Okay, give the correct order of each. Okay, Cu plus undergo disproportionation of copper and Cu. Oh! Ha! Ha! Which among these the following metal carbonyls are inner orbital complex with diamagnetic property? This is ApCO5, CrO6. ApCO5, CrO6, CrO6. Okay, also. Not ester. Ester methoxy. This is ether. And this is ester. Right, ester?
এস্টারের নামকরণ কিভাবে হবে? That is ethyl. Ethyl 1-chloromethanoate. Ethyl 1-chloromethanoate is the correct name. Right. Methyl methanoate. This is ester. Chloromethyl methanoate. Chloromethyl then methanoate. Okay. Next is alkyl alkylate. Okay. This is chloroethanamide. Okay. Correct order of acidic strength is correct order of acidic strength. Correct order of acidic strength is 1 then 3 then 2 because acidic strength है एखान থেকে H all will be the geometrical isomers, that means carbon double bond carbon, then fluorine chlorine bromine iodine. Here the GEI are 2 for either. What is the product of the following reaction? Nitrobenzene does not give Friedel-Crafts reaction. Nitrobenzene does not give Friedel-Crafts reaction. Aniline also does not give Friedel-Crafts reaction. Okay. No reactions, no reaction.